सुप्रभात दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक हो, फाइन हो, वेल हो, गुड हो, सेफ हो। ठीक है, तो फिर आपको इस वीडियो लेक्चर में खास करके स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, ठीक है, आप एक बार सब्सक्राइब का बटन है वो एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, लेकिन स्किप मत करना यार। ठीक है, तो स्किप मत करना, अंत तक देखना। वेरी लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होगा, बट या आई कैन से दैट इट विल बी ए 10 मिनट्स वीडियो। ठीक है, 10 मिनट वीडियो तक तो ले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बताना चाहता हूँ इस वीडियो में खास करके। ओके, सो दोज ऑल थिंग्स आर विल बी डिस्कसिंग इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में बताऊंगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन रेस्पेक्ट टू। ओके, तो हम इस वीडियो में खास करके साउथ के बारे में यूजुअली डिस्कस करेंगे, ग्लोबल साउथ के बारे में। और ग्लोबल साउथ में क्यों ऐसा क्या हो गया है जिसके वजह से पीएम मोदी ये वर्ड्स बोले हैं कि द वर्ल्ड इज इन क्राइसिस, द वर्ल्ड इज इन क्राइसिस एंड इट्स नॉट इवन बीन क्लियर। ठीक है, वो क्लियर नहीं है अभी तक कि कितना देर तक ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, कितना देर तक ये टिकेगा, व्हिच इज बीन सेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उसके वीडियो में या फिर उसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स है, जो भी टॉपिक्स है, हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पेज नंबर 12 आल्सो। ओके, तो पहली बात है कि द ग्लोबल साउथ डज नॉट हैव एन एडुकेट वॉइस इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, तो पहली बात है कि ग्लोबल या फिर साउथ से बिलोंग जो भी कंट्रीज है, उनका वॉइस उतना ज्यादा नहीं है। वॉइस इन द सेंस वॉइस फॉर डेमोक्रेसी, वॉइस फॉर इकोनॉमी, वॉइस फॉर डेवलपमेंट, वॉइस फॉर द थिंग्स विच नीड टू बी ए विच नीड टू हैव ए कंट्रीज फॉर इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, वो वॉइस उनमें नहीं है, जिसके वजह से इनएडुकेट सफिशिएंट क्राइसिस का मुकाबला हमको करना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई हियर इट इज बीन रिटन अबाउट वर्ल्ड इज इन क्राइसिस। Okay, so that's what here PM Modi actually wants from each and every perspective of global governance. Okay, so let us begin this with a very simple topic that today most of these advanced economies, ठीक है, तो most of these advanced economies are slowing down। ठीक है, तो फिर जरूर है slowing तो down हो चुका होगा, क्योंकि पेंडेमिक के पहले जैसा था वैसा नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ चुका है, the way we usually live, the environment is totally different. That's what it has been written. It is clear, it is even been clear that the 21st century global governance will come with the south, with or from the south of, okay, from south countries. Even I think it would be our work together. Okay, if we work together we can set the global agenda। ठीक है, तो फिर here we actually discuss about the teamwork which the government usually need, or the present government usually need for for a building of its constructive environment within the circle of its neighborhood। ठीक है, तो फिर जैसे कि हम जान सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज जो कि है उनके सर्किल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उनका ग्लोबल गवर्नेंस और साउथ में कैसे इंक्रीज हो सकता है, वॉइस को कैसे हम मार्क दे सकते हैं कि इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, इतना ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट मैटर करता है व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो here it is also been written the global south does not have an adequate voice। Here it is written he added that the countries of the global south would drive the world economy in the 21st century। ओके, जो साउथ से बिलोंग जो भी कंट्रीज है वो ग्लोबल इकोनॉमी को रन करेंगे, ड्राइव करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। बट हाउ, बट व्हाई इट इज नॉट बीन प्रोग्रेसिंग? बिकॉज द इफेक्ट ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक। ठीक है, कोविड 19 की वजह से, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकता है, टेररिज्म एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो हियर इट इज आल्सो बीन रिटन विद द 2 डे वर्चुअल समिट जो कि मोदी अटेंड किए हैं, वेयर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, okay, Hasina, and also ओके, सो प्राइम मिनिस्टर हुन चुन, ओके, कंबोडिया का। ठीक है, जो कि वियतनाम जो कि है, एंड लीडर्स ऑफ द नंबर ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग वियतनाम। ठीक है, उन सभी को उनका प्रेजेंस दिया गया है, उनका प्रेजेंस है एड्रेसिंग द 2 डे वर्चुअल समिट विद द साउथ। ओके, सो इट मैटर्स अ लॉट, it really matters a lot, okay, with the relationship or the bilateral ties within the south countries। Okay, so पेज नंबर 12 में से ये भी लिखा गया है कि मिस्टर मोदी said in 2020 global that represent the south assuring them and your voice is in your voice। okay, your priority are India's priority। okay, your voice is your voice and India's in your voice is India's voice। ठीक है, आपका जो भी आवाज है, आपका जो भी क्या है डिमांड्स है, वो इंडिया का भी डिमांड हो सकता है
हो सकता नहीं है। तो here is also been written your priorities are India's priorities, ठीक है। So as India begins G20 presidency, okay, this year, it is natural our aim is to amplify the voice of the global south. उसके बाद the countries of the global south would unite in the change that unequal global political financial governance structure, said the Prime Minister. Traditionally, the global south has been understood as the post-colonial countries of Asia, Africa, Latin America, but over the years the definition has undergone changes in multiple regional organization and conflict within this vast block of countries, which eventually introduce the change of the comparison. Okay, so पास से लेकर जब G20 का प्रेसिडेंसी लिया है, कौन कौन लिया है, वो है इंडिया लिया है। तो फिर साउथ को कैसे प्रोग्रेस करना, साउथ को कैसे डेवलप करना, अनइक्वल रिलेशनशिप नहीं रखना है, इक्वल रिलेशनशिप कैसे रखेंगे, जैसे कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका जैसा था, उससे उसके अंतर्गत जो भी इंक्लूजन है, उसके अंतर्गत जो भी प्रोग्रेसिव स्टेप्स है, वो सारा ले सकते हैं क्या, वो सारा कर सकते हैं क्या। दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ व्हाई द साउथ नीड टू गिव ए push up push up to make his or her voice in the global uh, memorandums, in the global image. Okay, that's what here it has been written, that's what here it has been said about the global crisis. Okay, so I hope you have enjoyed the session, but I will be taking some more time to explain. India has made मार्क्ड प्रोग्रेस इन एलएसी इंफ्रा डेवलपमेंट। आर्मी चीफ, जो आर्मी चीफ है वो यूजुअली बता चुके हैं कि इंफ्रा का डेवलपमेंट हो गया है। डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, development in the sense of commanding our troops, developing in the sense of destroying the perception of how actually we are been, how actually the other countries are been watching in the progress of development to restrict the attacks, to restrict the images, to restrict the we can say uh, to restrict the forces, okay, through our infra development. Okay, so here it has been also been written that while there are reports of infrastructure built up in the Chinese, okay, side, that that what doesn't comes to the force in the infrastructure has been developed in our side. Okay, Army Chief Major Pandi said that in Thursday starting that there has been marked improvement and there are plans for all weather connectivity and altitude connectivity. Terminal of the terming the situation along with the line of actual control with China stable but unpredictable. He said that the times of numbers there has been a straight increase in the numbers of Chinese troops opposite the army's eastern command. Okay, which he said came from the training has been remarked. He's even been said five of the seven flashing point has been resolved within the ongoing talks at the various level. Elaborating on infrastructure development, Jen Pandi said in the past 5 years, the border road organization has constructed close to 6,000 kilometer of road. For this, 21,000 kilometer has been along with the northern borders. Okay, as for the upgrade of a bridge needed to carry guns and tanks, as much as 7,450 meters of them were constructed. He started the frontline road, which runs a total of 1,800 kilometers, will connect the various valleys of Arunachal Pradesh. The plan has been re-energized and the funding has been assigned. Some work on it is already underway. General Pandi said there is aspects of all-weather connectivity in the both the borders of Ladakh and Kami in Arunachal. He further started that the Ladakh is in Jolni Tunnel and Jomoli Tunnel, which will links to the valley of Ladakh and will be operationalized by the end of the year. तो इसमें यूजुअली कंस्ट्रक्शन के बारे में यूजुअली दिखा गया है कि कैसे हम यूजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं विद रिस्ट्रिक्शन फोर्स एंड फ्रॉम क्रिएटिंग थाउजेंड ऑफ बॉर्डर्स ऑफ द रोड्स कनेक्टिविटी एंड जैसे कि forces which are been making some activities in the China's LOC. So those all things comes under this. I hope you have enjoyed the session. If you are new to this channel, please subscribe the channel, like the channel, and save the channel as soon as possible for getting the latest update regarding the regarding all the affairs related to Hindus. Okay,
I hope you have enjoyed the session, folks. I will not be lagging this video much more. Thank you. Thanks a lot for your presence in the video.